I'm your host, Salim bin Mohammed Rafi, and here is your YouTube channel Dark Justice. Dark or blind justice is because justice should be blind, but unfortunately it isn't. You will always find a tilt and biased judges. You will always find people manipulate judicial system and all no facts but lies, and lies. And when you talk about the cruelty, then you see the history, human history, you will not find any cruelty of that magnitude as you find this mentally deranged Bibi Natenyahu, a war criminal, the way he is killing the children and women every second of the time which is passing for the last 14 months. You can see that how I call him that he is a schizophrenic, mentally deranged person, and the real solution for him is a straight jacket. He should be put in that and should be in a mental hospital where electric shocks to his head and pass through his neurons so that the man with full of hatred, full of vengeance, he is not normal, and he should be, the first thing is he should be expelled from the United Nations because he has defied every United Nations institution, like UNRWA, killed at least 300 to 400 people who were just helping the people from the United Nations, and even killed the polio, drop people in the UNICEF and UNDP, and the World Health Organization. I think this man is, a criminal. It's a criminal. He should be hanged from his neck till he breathes his last. But who will do it? Who will put the bell in the cat's ring? Their own people are fed up and sick. Ask those women and all those wives, all those mothers, brothers and fathers who are burying their dead every day and forcing them to work in their idea, and then bulldoze the kids, innocent. And this is a policy of the Israeli government to kill every Israeli so that they can vacate Gaza. And once they vacate Gaza, they say it's a very, very precious property, and they want to sell it, and so the people could have beach, and that's what is the value of a human life for them. And they don't think Palestinians are human beings. They think they are animals. And I think I spit on the face of 57 Muslim countries, where how can they sleep at night when they see, small kids see their innocent eyes and they are begging for a morsel, begging for a drop of water with these swines, with this, I should not say all the Jews, because when I look at these grieving mothers and burying their dead ones in the graveyards, they are just like any other human being. But unfortunately, the people who are running the show are not. And that's the one who must go. Now, since this man fired, you can see how ungrateful these Jews are, because they supply money as they give it to a prostitute so that she offers herself to the Congress and Senate, and that is the job they have given to epics. And in return, they gave $19 billion to them in ammunition, dump bombs, F-35, and all sorts of guns, and even phosphorus bombs, and aircraft carriers, spare parts. Is another, the dirty, filthy countries, the Britain, who has been continuously supplying them spare parts of F-37. Now, when you are supplying all sorts of things, then with your hypocrisy, you say that you want ceasefire. You don't. You never wanted a ceasefire because you are the cause of the problem. How could you be the helper? And then look at that swine who goes there as a sectary state and says, I am here as a Jew. I'm not here as an Tom Blinken. I'm here then. So you can see that what a dishonest, what a filthy, dirty, and this scum, who says that you don't have to be a Jew to be a Zionist, and that is what the dirty and filthy face was Joe Biden. Now, what he left behind is, smells
and it will be the darkest pages in the history of mankind. And Natenyahu will go in the history as the darkest, the cruelest. He has superseded, number of Israel with precision and daring. For Netanyahu, the stakes couldn't be higher. His greatest fear has come to life, an emboldened Hezbollah, supported by Iran, launching coordinated attacks that could plunge Israel into a multi-front war. The current crisis stems from a long and complex history. Hezbollah, which means Party of God, was founded in the early 1980s as a resistance movement against Israeli occupation in southern Lebanon. Over the years, it has grown from a small guerrilla force into a well-organized paramilitary group with a powerful political wing. Today, Hezbollah is not just a local actor but a major regional player, heavily influenced and funded by Iran. But why is Hezbollah ramping up its attacks now? The answer lies in the changing dynamics of the region. Israel's military presence and influence have long been a thorn in the side of Iran and its proxies. Hezbollah has been preparing for this moment for years, stockpiling weapons, training fighters, and waiting for the right time to strike. With Israel facing internal political turmoil and regional instability, Hezbollah sees an opportunity to act, and they are doing so with deadly precision. Hezbollah is no longer just a small insurgent group. Over the past decade, they've grown into a formidable military force thanks to support from their patron Iran. The Syrian civil war provided them with a unique opportunity to gain combat experience, and now they're one of the most battle-hardened forces in the region. Hezbollah operates with a level of sophistication rarely seen in non-state actors, with a command structure, advanced weapons, and the backing of Iran's Revolutionary Guard Corps. Hezbollah's arsenal is staggering. With over 100,000 rockets and missiles, many of which are capable of reaching deep into Israeli territory, they've significantly upgraded their firepower in recent years. This is not just a war of attrition anymore. Hezbollah is using precision-guided missiles, which means they're capable of striking high-value targets such as airbases, critical infrastructure, and densely populated urban centers. Israel's Iron Dome missile defense system is effective, but can it withstand an assault of this magnitude? The danger posed by Hezbollah is multi-layered. This is not just about random rocket fire. It's part of a well-calculated strategy to undermine Israel's military deterrence. Over the past few months, Hezbollah has intensified its operations along Israel's northern border. It's not just missiles, they've deployed drones, anti-tank missiles, and even cross-border raids, targeting Israeli military installations and civilian infrastructure. But why now? Why has Hezbollah chosen this moment to escalate the conflict? The answer lies in Israel's internal political landscape. Netanyahu's government is in turmoil. Mass protests have erupted across Israel in response to controversial judicial reforms, leading to a divided nation. Netanyahu's ability to manage internal dissent while addressing external threats is being tested like never before. Hezbollah, seeing Israel distracted by domestic issues, is seizing this moment to challenge बुनियाद रखती है और बुनियादें उनकी हिला दी हैं, क्योंकि ऐसा हमला कभी हुआ नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पर जो तबाही के मनाजिर चल रहे हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि इजराइल को इस वक्त तमाम के तमाम फौजियों के बारे में खदशात लाहक हैं कि अब हमला ना तो हिजबुल्लाह करेगी ना ईरान या बाहर से, वो अलग हमले हैं, लेकिन अंदर से जो हम पर हमले हो रहे हैं वो हम रोक नहीं सकते। ये इतना तबाहकुन हमला था कि आप सोचें, एक इस्राएली ने, ये बात समझिए जरा, इसको जरा आप गौर से देखिए, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये इजराइल की फौज का मेजर था, यानी कोई आम शख्स नहीं था। इस बंदे ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, और खात्मा उसने क्यों किया? ये आपको जो तस्वीर नजर आ रही है उसकी माँ के साथ है।
ये असल में तकरीबन 36-38 साल का ये बंदा था। ये था पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार। अब ये 2006 से इजराइल की फौज में है, रिजर्व जो फौज है, ये जो लड़ाई करी। इन्होंने कहा जी हमने, और सोचे इसने लिबनान जंग में भी पार्टिसिपेट किया, और वो 2006 की बात है। इस बंदे ने कहा कि मैंने, यानी पूरी तरह इन लोगों ने मारा जाकर गजा के अंदर आम लोगों को। उसके बाद इसकी जो दिमागी हालत थी वो ख़राब हो गई, और उसने पूरी कोशिश की कि मुझे मासूमों को मारा, क्योंकि वो दिमागी तौर पर काम नहीं कर रहा था। जाहिर सी बात है, अब ये जो बीमारी होती है उसमें जब आपके पास बुलडोजर होते हैं तो आपको वही लाशों आप पर कब्जा करते हैं, ये अलग बात है। अब ये इनके जब Mass protests have erupted across Israel in response to controversial judicial reforms, leading to a divided nation. Netanyahu's ability to manage internal dissent while addressing external threats is being tested like never before. Hezbollah, seeing Israel distracted by domestic issues, is seizing this moment to challenge Israel's military. He has repeatedly called for tougher international action against Tehran's nuclear ambitions and its regional meddling. Now, as Hezbollah strikes Israel with increasing ferocity, Netanyahu's warnings seem more prophetic than ever. His greatest fear is that Hezbollah, emboldened by Iran, will escalate this conflict to the point where Israel is forced into a full-scale war. The true nightmare for Netanyahu is not just Hezbollah, it's the possibility of a multi-front war. Hezbollah's attacks from Lebanon could soon be mirrored by Hamas in Gaza, where tensions have been steadily rising. And to the east, in the West Bank, Palestinian unrest is growing, leading to violent clashes with Israeli security forces. If Israel is forced to fight on three fronts, Hezbollah in the north, Hamas in the south, and unrest in the West Bank, its military will be stretched to its limits. Even more concerning is the possibility that Iranian-backed militias in Syria and Iraq could join the fight, launching attacks from Israel's eastern borders. Such a scenario would overwhelm Israel's military defense, acutely aware of the consequences of every decision he makes. If he chooses to escalate, he risks a unified front among Israel's enemies, with Iran potentially leveraging its proxies to open new fronts in Gaza and the West Bank. The political ramifications are significant. Opposition parties within Israel are watching closely, ready to pounce on any missteps. In a moment of crisis, domestic unity is crucial. Yet Netanyahu's government is plagued by internal dissent and protests against his leadership. His handling of the situation will be scrutinized not just by his political opponents, but also by an anxious public. How will he justify the potential loss of lives and the economic cost of war to citizens who are already struggling with inflation and other socio-economic issues? As Netanyahu prepares for what could be the fight of his life, the world watches. Can Israel survive Hezbollah's relentless assault? Or are we witnessing the beginning of a broader regional war that no one can stop? Cost is rising alarmingly. For the people living along Israel's northern border, daily life has turned into a precarious existence, overshadowed by the constant threat of missile attacks. Families have become accustomed to the blaring air raid sirens, which can sound at any moment, plunging them into panic. Children who should be attending school and playing in the park are instead being whisked away into bomb shelters, their childhoods marred by fear and uncertainty. The psychological toll on these young minds is profound. Many suffer from anxiety and trauma, unsure of when they will return home, or if they'll see their homes and communities again. But the suffering isn't confined to Israel. In Lebanon, where Hezbollah operates, the civilian population is caught in the crossfire. Families in border towns find themselves fleeing their homes, unsure of where to go, or if they'll be able to return. The air is thick with fear as communities grapple with the uncertainty of their future. Entire neighborhoods are devastated, and the humanitarian crisis is deepening.
The humanitarian response is crucial, but often inadequate. Aid organizations are scrambling to provide food, water, and medical assistance to those affected, but the escalating violence makes it difficult to reach those in need. Hospitals in both Israel and Lebanon are overwhelmed, struggling to treat the injured amid ongoing hostilities. In Israel, the psychological impact is becoming evident, with many civilians reporting increased levels of anxiety and depression. Support networks are working tirelessly to provide mental health services, but the need far outstrips the available resources. As the conflict rages on, it's the civilians who bear the brunt of the violence. Mothers, fathers, and children on both sides are united in their desire for peace, yet find themselves ensnared in a cycle of fear and desperation. The stark reality is that every rocket fired, every retaliatory strike, leaves behind a trail of destruction and despair, affecting lives far beyond the battlefield. As the conflict escalates, Prime Minister Netanyahu finds himself at a crossroads, facing a series of impossible decisions that could define his legacy and Israel's future. The situation is dire, and every option carries significant risks. Should he opt for a full-scale ground invasion of Lebanon to neutralize Hezbollah's capabilities once and for all? Such a move could be a decisive victory, but it also runs the risk of triggering a broader regional war that would embroil Israel in a protracted conflict. Netanyahu is acutely aware of the consequences of every decision he makes. If he chooses to escalate, he risks a unified front among Israel's enemies, with Iran potentially leveraging its proxies to open new fronts in Gaza and the West Bank. The political ramifications are significant. Opposition parties within Israel are watching closely, ready to pounce on any missteps. In a moment of crisis, domestic unity is crucial. Yet Netanyahu's government is plagued by internal dissent and protests against his leadership. His handling of the situation will be scrutinized not just by his political opponents, but also by an anxious public. How will he justify the potential loss of lives and the economic cost of war to citizens who are already struggling with inflation and other socio-economic issues? As Netanyahu prepares for what could be the fight of his life, the world watches. Can Israel survive Hezbollah's relentless assault? Or are we witnessing the beginning of a broader regional war that no one can stop? The future of Israel and the Middle East hangs in the balance. Don't forget to subscribe for more in-depth analysis and updates on this unfolding crisis. What do you think? Can बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यकीन कीजिए कि किसी ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, ये भयानक आग ज़दा मनाजिर, आपको लगेगा कि शायद ये इसराइल के जहाज आए हैं या उन्होंने मिसाइल मारा है, वो तबाह करके चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हिजबुल्लाह की जानिब से ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हमले किए गए हैं और इतनी तबाही मची है इजराइल के नॉर्थ की साइड पर, इतनी तबाही मची है कि आसमान से बात कर रहे हैं आग के शोले। और इस वक्त इजराइल को समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, क्योंकि तिल अवीव को हिट किया गया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया गया है, नॉर्दर्न एरिया को हिट किया गया है, और आप देखिए कैसे डायरेक्ट मिसाइल जाकर लगे हैं जिसने इजराइल के अंदर तबाही मचा दी है। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में हुआ क्या है। अचानक के हिजबुल्लाह ने एकदम हमले आज शुरू कर दिए हैं, जबकि इवन के सारी दुनिया सोच रही है कि भाई ट्रंप तो जीत गया है, ट्रंप तो आ गया है, तो ट्रंप के आने के बाद तो कम से कम ये काम नहीं होना चाहिए था। देखिए, दो चीजें ज़हन में रख लें। ये जो तबाही हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप जरा लोगों की हालत देखें। ये वहां पर खवातीन हैं और वहां पर लोग हैं, और इनके चेहरों पर खौफ देखिए जब हिजबुल्लाह के मिसाइल टॉप से आ रहे हैं। ये ट्रंप के आने के बाद की सूरत हाल है कि वो टॉप से मिसाइल आ रहे हैं और वो छुप रहे हैं और चीख रहे हैं, रो रहे हैं। आपको यहाँ से अंदाजा होगा कि हमलों की इंटेंसिटी क्या है। और आप सोचें कि इजराइल के मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर आज खबर तो सिर्फ एक ही है, जाहिर सी बात है खबर बड़ी है, और वो खबर है
कि मुज़ाकरात, मामलात ये सारे पीछे चले गए हैं और यानी अमेरिका के अंदर इलेक्शन, ये तमाम चीज़ें आगे आ रही हैं। इस सूरत हाल में हमला हो गया है। अमेरिकी इंतखाबात की वजह से मामला पीछे चले गए। अब हुआ क्या है कि हिजबुल्लाह ने इतने तबाहकुन हमले कैसे किए हैं और इतनी तबाही, क्या उन्होंने वो मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं जो उन्होंने कहा था हम करेंगे? एग्जैक्टली ये हुआ है। देखिए हुआ क्या है, उन्होंने आज हमला किया है बड़ा शदीद। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि अब वो आगे बढ़ गए दो वजूहात की वजह से। एक तो रात को जो सूरत हाल हुई है कि जब इलेक्शन हो रहा था, तो आप ये सोचें कि आधी रात को आता है नेतन्याहू और आकर कहता है मेरे अजीज हमवतनों, मैंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को फारिग कर दिया। खुद इस वक्त वो समझ ले डिफेक्टिव डिफेंस मिनिस्टर, और उसके बाद उसने करना आर्मी चीफ को फारिग। अब इस सूरत हाल के अंदर हिजबुल्लाह को इस बात का अंदाजा हो गया है कि हमने ये जो जंग लड़ी है, हमने एक महीने में इनका इतना हशर नशर कर दिया है कि ये सारे के सारे लोग आपस में लड़ पड़े हैं। तो अब हमें इनसे लेना है बदला। आपको दोबारा ये मनाजिर देखिए, आपको लगेगा कि ये मनाजिर जो हैं ये तो हमें गजा के लग रहे हैं, ये तो बैरूत के लग रहे हैं, ये इसराइल के मनाजिर हैं, ये वहां पर तबाही के मनाजिर हैं। और दूसरा उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने ट्रंप को एडवांस में बता दिया है कि हम ट्रंप के, देखिए ट्रंप ने आना है अभी जनवरी के अंदर, तो वो बता रहे हैं कि जीत तो वो गया है, वो तो उठाते ये सारा सेटअप फारिग होते और जनवरी का टाइम आएगा। उसने असल में बता ये दिया है कि हमने इतना हमला करना है तुम पर, इतना हमला करना है कि ये सारी की सारी जो तबाही है उससे पहले जंग इंतहा को पहुंच जाए, इंतहा को जंग पहुंच जाए, कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात इतने ज्यादा खराब हो जाए कि ट्रंप के पास कोई चॉइस ना रहे कि भाई इस जंग को बंद करना है, बड़ी तबाही हो गई। आपको पता है जितनी जंग आज इंटेंसिफाइड एमलेस वॉर लड़े हैं, इस जंग का ना कोई एम है ना कोई मकसद है, एमलेस वॉर है, एंडलेस वॉर है। सो इस सूरत हाल में उन्होंने वो दिल छोड़ा हुआ है और उसका नुकसान ये हुआ है कि जब आप अपनी पोजीशन छोड़ते हैं तो अगले आप पर हमला करते हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आज हसन नसरुल्लाह को तकरीबन आप ये समझ लीजिए 35 से ज्यादा दिन हो चुके हैं दुनिया से रुखसत हुए। तो बेशक इजराइली जो मर्जी सोचते फिर अगलों ने अपना बदला लेकर आना है, उनको इस चीज से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है। उन्होंने बड़ा क्लियर अपना खेल शुरू कर दिया है कि हमने तो हसन नसरुल्लाह की यानी मरने की जो हालत है उसके बाद से अब तक का जो गम है वो अभी तक हम खत्म नहीं कर सके। तो उनकी तरफ से इसराइली जो मर्जी सोचते फिरे, जो मर्जी उनका मामला हो। बहरहाल एक बात तय हो गई है कि इसराइल के साथ उन्होंने जो करना है वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, और वो दुश्मन के अंदर फूट पड़ जाए, जाहिर सी बात है वो इसका फायदा लेते हैं। बहरहाल इसराइल ने एक अच्छी प्राइस पे कब्जा नहीं कर सकी, डिफेंस मिनिस्टर फारिग, आर्मी चीफ को उड़ाने की तैयारी है और बहुत सारी चीजें, सारी की सारी हिजबुल्लाह ने चीजों को मैनेज किया है। और वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हमने इसका देना है जवाब, भरपूर जवाब देना है। तो जवाब अब आपके सामने आ रहा है। अब यही वो वजह है कि इजराइल इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि मामला इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि हमें हमारा दिफाई सिस्टम में सब वीक हो गया है। एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आज उनका बिल्कुल ही डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, तो उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने मारना है। ऐसा लग रहा है कि उनके डिफेंस सिस्टम को रोक लिया गया और ट्रंप को बड़ा पैगाम दिया गया। देखिए ट्रंप हाइट्स, ये आप जरा तस्वीर देखिए कि नेतन्याहू यहाँ पर आया था और उन्होंने आकर जब गोलान हाइट्स इनको दे दी थी, ये बड़ी पुरानी बात है, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने आकर उस वक्त ये कहा था कि जी हम इसका नाम रखेंगे ट्रंप हाइट्स। तो आज ट्रंप हाइट्स के ऊपर हमला हुआ है, आज जो तिल अवीव पर हमला हुआ है, उनके रनवे पर हमला हुआ है, उनका बोइंग तैयारा जो है उसको हिट किया गया है। इसके अलावा आज आप देखिए आग के जो शोले निकल रहे हैं, ये खौफजदा है। लोगों का हाल देखें, ये इतनी तबाही हो रही है कि हमने आज से पहले ऐसी तबाही इजराइल में नहीं देखी। देखिए जंग जब से छिड़ी हुई है तब से लेकर अब तक ये मामला सामने आ रहा है। अब वो रॉकेट्स मिसाइल इतने ज्यादा बरसाए जा रहे हैं और दूसरा पैगाम भी साथ साथ वो दे रहे हैं, वो साथ साथ कह रहे हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है, हमने बड़ी तबाहकुन सूरत हाल करनी है। और दूसरा अजीबोगरीब मामला ये हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि हम अफगानिस्तान का जो एपिसोड है वो रिपीट टेलीकास्ट पर लगा हुआ है। अफगानिस्तान का सिलसिला स्ट्रेटजी यही थी कि अमेरिका को 21 साल लगे थे, लेकिन यहाँ हुआ ये है कि पहले अमेरिका ने वहां डोमिनेट किया, बाद में उनको मार पड़ी। गजा में हुआ क्या है कि गजा में इजराइल की फौज पर हो रहे हैं आज हमले, बहुत ज्यादा हमले हो गए हैं, जीरो डिस्टेंस पर जाकर उनको मारा गया और इतने फौजी उनके मारे गए जिसकी इंतहा नहीं। इससे हुआ क्या है, इन्होंने स्ट्रेटजी ये खेली है कि जो इजराइल के फौजी हैं, आम फौजी की बात हो रही है, जर्नैलों की भी बीच में आप समझ लें इनपुट है, वो कह रहे हैं कि जंग खत्म, वो लड़ना नहीं चाहते।
और वो बड़ा खुश है। आप इजराइल के इस टीवी चैनल से अंदाजा लगा लेना कि सारे वहां पर चीयर्स कर रहे हैं कि जी वो ट्रंप आ गया है, यानी लाइव प्रोग्राम के अंदर चीयर्स कर रहे हैं ट्रंप आ गया है। तो क्या बात है जी, हमारी अब तो बड़ा जश्न होगा। वो ये शायद समझ रहे हैं कि भाई ट्रंप आ गया है तो हमारी जंग को आगे लेकर चलेगा। ट्रंप ने नहीं ले जाना। और इसराइल का फौजी भी बड़ा खुश है, वो चाह रहा है कि ट्रंप आ गया है, कम से कम ये जंग बंद करेगा, हमारी जान छूटेगी, फौजियों के घर वाले भी। तो इस सूरत हाल में फौज का जो मोराल होता है वो गिरता है। जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जब बातचीत जारी होना शुरू हो गई थी आखिरी 1 साल में, तो तालिबान ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था जी हम हमले करेंगे। एक शर्त असल में उनके सामने रखी गई थी कि भाई आप ये जंग बंदी करें, मुज़ाकरा चलते रहे। उन्होंने कहा था जंग बंदी नहीं करनी। उस चक्कर में हुआ क्या, अमरीकी फौजी दिल हार गए, यानी दिल छोड़ दिया उन्होंने कि यार अब तो हम बिल्कुल ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने क्या लड़ना है। बल्कि वो तालिबान को पैगामात भेजते रहे थे कि भाई देखें, यानी मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल फौजी पैगामात भेजते रहे। वहां पर जो लोकल लोग होते थे, काम करते थे, उनकी ड्यूटियों पर थे अफगानी, उनको पैगाम देते थे कि यार आप इनको जाके कि हम पर हमले ना करें। और कहा जी हमारा नाम रख ले, मैं इस यूनिट में काम करता हूँ, मैं जी फलाना हूँ, आपने हमला नहीं करा। बदले में उनको असला चीजें बहुत कुछ पहुंचाया उन्होंने, राइफल चीजें बहुत कुछ दिया। अब वो दिल हार गए थे। एग्जैक्टली आज इसराइल की फौज दिल छोड़ बैठी है। मसला ये हुआ है, वो इस उम्मीद के साथ तो है, अब वो ये सोच रहे हैं कि यार जनवरी तक पता नहीं, ट्रंप के आने में भी इतना टाइम है, हमारी तो गाजर मूली बना देंगे। अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरह तबाही होती रही, तो आप सोचिए रनवे उड़ा देंगे, एयरपोर्ट्स उड़ा देंगे, और बताएं क्या कोई सूरत हाल बाकी रह गई जो ना उड़ाने वाली हो। और एक बात इन में रहे, ट्रंप को पल पल खबर दी जा रही है, और ट्रंप ने आने से पहले एक बात कही थी। उसने कहा था कि लिबनान की जंग मैंने खत्म करनी है। आपको पता है जो लेबनीज Firon, Pharaoh and Hitler, even he is not a good general, because you could see when Napoleon saw that his men were going to die, he went on a small island and he accepted his defeat, and that was it. So he could save lots of hundreds and thousands of Frenchmen. So did even the worst Hitler. When Hitler knew that he has been in many fronts, he's been defeated, he went down into the basement and shot himself. But this son of a bitch, he will not. He just, even drone which went into his bedroom, and he guts always his, the victim is the weakest person and the person who talks sense into, and that was his defense minister and I think the chief of army staff, who were seeing their men, young men and women dying both in Gaza, and they were dying both as sicking duck in Lebanon, especially in there. And I'll show you some of the scenes, you see for yourself. But look at the people demonstrating in there, and they are in millions, but he wouldn't want to ceasefire, he wouldn't get the hostages back, he wouldn't do anything. No, so nobody is expelling them from the United Nations, nobody has put sanctions on it, nobody is stopping arms supply to them. Then how you think a person like that would do? So there was a movement, and there is a movement from within, and now you can see for yourself, they don't want to die. See the men and women, young girls and men in uniform out on the road. This is if no less than a mutiny, and now this mutiny will be useless unless someone shoots him and kills him forever, and along with him there are few more extremists which are worse than them, and then alone, maybe a martial law, maybe an interim government of the people who can get their hostages back, get the ceasefire, get the people, the northern settlers, to go back in there and have peace in the region. And I hope that Donald Trump, but that's too late to wait for him to the January the 20th, because don't expect that Pentagon or American establishment will let him do it. I'm afraid and I'm scared that even Donald Trump's life is at stake. With that kind of a Jewish money and extremists around, both in American establishment, in Apex. Remember, the JF Kennedy, it was the Jewish businessmen who got him in Dallas, Texas. And they got together and invited him to this function. That's why Jacqueline Kennedy and they were going. But they are arranged the person at the top of the house to shoot him. So this is Jewish again, and all the establishments in their pocket. So unfortunately, I am scared, although there is, a clear-cut win by Donald Trump. And I request in this my vlog to, Elon Musk,
that he gets all kinds of tweets, and I think in there he can read between the line where the intrigue is cooking up, whether it is in the Pentagon, it's in the army, it is in the defense industry, it's in the Israel, it is in some other European capital, and I think he should inform the president and advise him without having official position as an advisor continuously. And Zulfi Bukhari and even I think some friends of Imran Khan who are very high up there in there and well informed should inform this man, and so that the Trump, he is a key to the peace in the world and he will do it. And I wish of God nobody hurts him. And I'm addressing this to Ivanka, his daughter, and his Melania, Trump is there, and his son, that please take care of your father, look after him, and there is no way, let this man go. And now this is about time. If you want peace in the world, then let him go. Let him go. You can dispense with him. This is not too much of a cost to bear, so let him go. Please subscribe to this channel and leave your kind comments. Press the bell button and subscribe so that the latest vlog or the analysis reaches you in time.